Good evening, students. Now, continuing with the same lesson, we are moving towards the next topic. Next topic is Reserve Bank of India and its function. Already we have completed commercial bank and its function, and now we are moving towards Reserve Bank of India and its function. So let us see now. Reserve Bank of India. The Central Bank of India is known as the Reserve Bank of India. Central Bank. You can say apex banks at the center, right? You can say head of all the commercial banks is Central Bank, and that is known as Reserve Bank of India. Under the Reserve Bank of India Act 1934, the Reserve Bank of India established on 1st April 1935. It was established, just started, right? When? In 1935 on 1st April with the private paid up capital. So it was initially started with the private capital, with the capital amount you can say rupees 5 crores. RBI was nationalized on January 1st, 1949. Once it was started, it was established in 1935 with the private paid up capital of 5 crores, and then it became a nationalized reserve bank, central bank in 1949, and date was 1st January, right? Then this can come in the one mark, or you can say in the MCQ pattern. When it was established, so 1st April 1935. When it became nationalized, so 1949. The Reserve Bank of India is India's central bank, which controls the issue and supply of Indian rupee, right, students? Reserve Bank of India is central bank which controls the issue of currency and supply the Indian currency also. RBI is the regulatory of the entire banking in India, right? Entire जो banking system है वो regulation किसके हिसाब से चलता है? RBI के हिसाब से चलता है. RBI plays an important part in the development strategy of the government of India, right? So for the development of the government part also, RBI plays an important role for the development of government sector. Next, functions of RBI now. So functions, if we are talking, so we are having two types: monetary functions and non-monetary functions. Means in terms of money, it is relating to which type of functions, what functions they are doing related to the money terms. And नॉन मॉनिटरी, दैट मीन्स मनी के अलावा भी कौन से फंक्शंस वो लोग करते हैं. सो फर्स्ट इज नोट इशूइंग अथॉरिटी, और यू कैन से करेंसी इशूइंग. द होल एंड सोल अथॉरिटी मोनोपोली हैज बीन गिवन टू द आरबीआई फॉर द इशू ऑफ करेंसी नोट्स. Then second one is bankers bank or lender of the last resort. बैंकर्स बैंक, बैंकों के ऊपर भी एक बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. दैट मीन्स बैंक को अगर कोई भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, लोन चाहिए, तो कौन देगा? उनको आरबीआई देगा. दैट मीन्स बैंकर्स का भी बैंक जो है टॉप पे कौन है बैंक के? दैट इज आरबीआई. बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. नाउ आरबीआई प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो. हमारे जो देश की गवर्नमेंट है उसको गाइड करती है, लोन चाहिए तो लोन फैसिलिटी, एडवाइस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द बैंक जो है गवर्नमेंट को कौन देती है? आरबीआई सपोर्ट करती है. देन कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. फॉरेन एक्सचेंज की जो भी रिजर्व्स है, फॉरेन करेंसी है हमारे देश की, वो कौन रखता है? आरबीआई अपनी कस्टडी में रखती है. देन लास्ट वन इन दिस इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, और यू कैन से क्रेडिट कंट्रोल इन द मार्केट. इफ उधारी बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में, उसको कंट्रोल कौन करता है? जैसे इन्फ्लेशन को भी कौन कंट्रोल करता है मार्केट में, उसी तरह से आरबीआई प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल for the credit control. Then moving towards the next, that is non-monetary functions, collection and publish of the data. RBI only collect करती है data of the various banks you can say, and market में reveal भी कौन करेगा? RBI ही information देगा. Then second one is regulatory and supervisory function. One type of an supervisory function. RBI is doing supervision upon all the commercial banks, right, students? And regulations, whether they are using, they are following the rules and regulations given by the RBI or not. So he is keeping a constant view on all the commercial banks. Development and the promotion function. Now banks are also developing at every stage, every step you can say, and they have to do the promotion functions also. So who will decide for the
development strategy, and what should be our promotion policies. Who is going to decide? So RBI is the whole and sole authority given to decide all these functions to enhance the facilities of the all the banks of the commercial bank. In short, we can say the rules regulations of the banks. Who is going to decide? RBI is going to decide all the rules and regulations of banks. Next, now, as an apex, Banks of India performs function as monetary functions of RBI. Now we are going to do the monetary functions of RBI. So these many are the monetary functions, as we have seen the head points. Once again, we are going to see the head points. Let us see. सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल जो फाइनेंस है उसका सुपरविजन कौन करता है, पैसे का सुपरविजन कौन करता है? सो आरबीआई करती है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट को कोई हेल्प चाहिए तो कौन करेगा? आरबीआई। देन मॉनेटरी पॉलिसी, ये डिटेल में क्वेश्चन आएगा कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और वो आरबीआई का फंक्शन है। सो यहाँ पे हम देख लिया एज अ हेड पॉइंट, वी आर ओनली गोइंग टू सी हियर, and detail we are going to see the whole question after this, or you can say in the next video lectures. Then issue of the currency, this is the monopoly right of issuing the currency notes. currency जो भी है देश की कौन छापता है? That is RBI is the bank, those who are given the authority to issue the currency. Then bankers bank, all the banks have to answer to whom? RBI. Or you can say RBI is having control over all the commercial banks. Then foreign exchange management, the India or our nation, whatever the foreign exchange we are having, foreign currency we are having, who is going to manage, who is going to keep under control? So RBI is the bank, is keeping the control over the foreign exchange, or you can say the custody of our foreign exchange. Next, first monetary functions in that first, that is currency issue. Role of RBI as an issue of currency notes. Every note issued by RBI has its name printed on the top. At the top of the note name, you can see here it is written what? Reserve Bank of India. So every note you will be seeing that the name of the bank, that is RBI, on the top with the signature of government below the promissory note, and you will be finding the signature of the our governor also on this promissory clause. It is the sole authority in India to issue currency. RBI has given the sole authority, और किसी के पास भी authority नहीं है कि वो नोट छाप सकता है other than you can say RBI. The objective are to issue bank notes and giving public adequate supply of the same. राइट, सो इशू भी इसको करना है, बैंक नोट छापना प्रिंट भी इसको करना है, और मार्केट में सप्लाई भी इसको ही देनी है। टू मेंटेन द करेंसी एंड द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री, इट यूटिलाइज इट्स बेस्ट एडवांटेज। नाउ आरबीआई हैज टू मेक द कंट्रोल और इक्वल बैलेंस अमंग द क्रेडिट सिस्टम एंड द करेंसी। बहुत ज़्यादा करेंसी भी मार्केट में फैलना नहीं चाहिए, नहीं तो जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। सो राइट अमाउंट राइट टाइम पे मार्केट में कितना बाहर आना चाहिए मनी, दैट आरबीआई हैज टू डिसाइड, एंड टू मेंटेन द रिजर्व्स ऑल्सो, और आरबीआई को रिजर्व्स भी अपने पास रखने होते हैं। द बैंक इशूज एंड एक्सचेंज करेंसी नोट्स एंड कॉइन एंड डिस्ट्रॉय द सेम व्हेनेवर दे आर नॉट फिट फॉर द सर्कुलेशन। सो अगर कोई डिस्ट्रॉय हो जाती है करेंसी, राइट, बोल सकते हैं वो नोट बंदी जैसे आई थी, अगर उन नोट्स को कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा तो उसको डिस्ट्रॉय करने का राइट भी किसको है? आरबीआई को है। सो कॉइन्स को, नोट्स को डिस्ट्रॉय भी करना है। सेम टाइम आरबीआई हैज गिवन द राइट टू डिस्ट्रॉय द नोट्स, दोज द नोट्स व्हिच आर नॉट फिट टू बी इन द सर्कुलेशन, में जो मार्केट में चलने के लायक नहीं है तो उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देन बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सो अवर गवर्नमेंट तो कौन करता है सपोर्ट? दैट इज आरबीआई। बैंक is going to support the government, in which form we can see now. It also acts an advisor to government on on economic and financial matters. गवर्नमेंट के जो भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स है उसको कौन एडवाइस करेगा? आरबीआई इज गोइंग टू गाइड एंड एडवाइस to the government. In brief, as a banker to the government, the RBI renders the following functions: collect taxes and make payment on behalf of the government. Government के basis पे कहीं से taxes collect करनी है तो कौन करेगा? RBI। कहीं भी पेमेंट देनी है तो कौन देगा? RBI। सो गवर्नमेंट की हेल्प कर देता है। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डिपॉजिट भी देता है तो आरबीआई को अपने पास रख लेना है। कलेक्ट चेक्स एंड ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट्स, गवर्नमेंट अकाउंट में जो भी चेक्स आए हैं, ड्राफ्ट्स आए हैं, उसको कौन कलेक्ट करता है? आरबीआई का कलेक्ट करता है। प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को लोन भी चाहिए शॉर्ट टाइम का, उसका डिपॉजिट भी रखेगी, उसको लोन भी चाहिए तो कौन देगा? आरबीआई। नेक्स्ट,
प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए, एक्सचेंज करवानी है करेंसी, सो वो भी कौन करके देगा? आरबीआई। सो एज अ बैंक के जो भी काम है हमारी गवर्नमेंट के कौन करता है? आरबीआई करती है। ही हैज गिवन द सोल अथॉरिटी टू डू all the functions, all the supporting functions for the our government. Then third one is bankers bank. The RBI being as the apex monitoring the institution has obligatory powers to guide, help and direct other commercial banks. Bankers bank, all the commercial banks are ruled by whom? आरबीआई। आरबीआई हैज गिवन द एपेक्स पे है, टॉप पे है, तो मॉनिटरी करने को उसको ही दिया गया है। वो एक इंस्टीट्यूट है जो मॉनिटरी कर सकता है टॉप पे बैठे बैठे, और उसके पास पावर है इतने कि दूसरी बैंक्स को गाइड करना है, हेल्प करना है, डायरेक्ट करना है कि कंट्री में किस वे से उनको चलना है। नेक्स्ट, एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन अ पार्ट ऑफ देयर रिजर्व्स विद आरबीआई। कमर्शियल बैंक्स को कुछ ना कुछ रिजर्व पोर्शन जो है डिपॉजिट्स का आरबीआई के पास रखना होता है, और वो रेट है आरबीआई डिसाइड करती है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया गया डिपॉजिट्स का, वो अमाउंट कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होगा। So see now 4% of the total deposits, both demand and time deposits as cash reserve ratios. Besides this, every bank is required to maintain 21.5 of total deposits as SLR and must submit weekly statement of their transactions to the RBI. ये सब डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएगा। SLR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियोज क्या होते हैं। यहाँ पे जस्ट इतना समझना है, कमर्शियल बैंक के जो भी डिपॉजिट्स आते हैं, टोटल डिपॉजिट्स, वो डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स का 4% जो है उनको वो पैसा असाइड करके आरबीआई के पास जमा रखना होता है। राइट, अगर कभी भी कमर्शियल बैंक को फंड नहीं बचता है और लोग डिपॉजिट लेने आ जाते हैं, कोई कमर्शियल बैंक लॉस में जा रही है, तो भी उसका कुछ ना कुछ पोर्शन तो क्या है, आरबीआई के पास रिजर्व रहेगा, तो उसको वो हेल्प कर सकती है इन द टाइम्स ऑफ द क्राइसिस, यू कैन से। सो इसके लिए वो क्या करती है, कैश रिजर्व रेशियो अपने पास रखवाती है। देन the RBI controls the credit created by the commercial banks by varying the proportion of the reserves, right? वो कंट्रोल करने के लिए प्रोपोर्शन जो रेट का है वो वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन आर। ये रेट ऑफ पर्सन 4 की जगह 6 भी हो सकता है एंड 2 भी हो सकता है। सो जो आरबीआई है वही क्या करती रहती है, वेरिंग करती रहती है कि कैसे रखना है, कितना रखना है और क्या क्या रखना है। इट फैसिलिटीज द क्लियरिंग एंड रीडिस्काउंटिंग द प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ द फंड्स। नाउ बैंक्स के बीच में बैंक को एक दूसरे से अगर लोन लेना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बिल्स है वो डिस्काउंट करवाने हैं, प्रॉमिसरी नोट्स को रीडिस्काउंट करवाने का है, एडवांस में उन लोगों को डिस्काउंट करवाने हैं, बिल्स चेक्स हैं उसको एनकैश करवाना है। सो ऑल द इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस are followed by RBI, you can say. Then similarly, in need of an urgency, these banks approach the RBI for funds. Thus it is called the lender of the last resort. अगर कोई अर्जेंसी आ जाती है, बैंक के पास एक दूसरे से फंड मांगने गए, लोन मांगने गए, नहीं मिला, दूसरी बैंक्स उसको हेल्प नहीं कर रही है, सो अल्टीमेटली लास्ट रिसोर्ट कौन है हमारे पास? आरबीआई। आरबीआई मीन्स हमारे मीन्स कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक एक ने दूसरे बैंक से हेल्प मांगी, नहीं मिली, दूसरे से मांगी नहीं मिली, तीसरे से मांगी नहीं मिली, सो एट लास्ट आरबीआई इज गोइंग टू हेल्प द कमर्शियल बैंक। मीन्स हमारे पास एक रास्ता, लास्ट रास्ता बचता है, वो है आरबीआई जो है हमको हेल्प करेगी ही करेगी। देन फोर्थ वन इज क्रेडिट कंट्रोल। उधारी जो है मार्केट में कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करती है। इन मॉडर्न टाइम्स क्रेडिट कंट्रोल इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑफ द क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल। The Reserve Bank regulates and controls the volume of the direction of credit by the quantitative and qualitative controls. These are the quantitative controls are the, you can say, part of the monetary policy, जो लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। सो यहाँ पे जस्ट नाम ही आप लोगों को जस्ट बी अवेयर कि आरबीआई के पास ऐसे कुछ हथियार हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जिससे वो उधार जो है मार्केट में कंट्रोल कर सकती है, और वो है, इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से आरबीआई जो है मार्केट में क्रेडिट जो है, इतना पैसा जो उछल रहा है, उसको कंट्रोल करती है, राइट। क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स इन विच द बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वेरिएबल रिजर्व रेशियोज, ये सब इसके क्वांटिटेटिव के हेड पॉइंट्स है जो डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी में आएंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्वालिटेटिव एंड सिलेक्टिव credit control on the other hand includes the rationing of credit margin requirements and the direct actions and moral saturation publicity is known as the, you can say,
credit controls, which are the qualitative steps taken by the RBI. This is also the part of the monetary policy. Monetary policy में दो आ जाते हैं, quantitative controls and qualitative controls. With the help of this, it is going to control the credit in the market. Then last in this monetary functions, custodian of the foreign exchange reserves, custodian of foreign exchange, foreign currency को custody में कौन रखता है? That is RBI is the person, or you can say institution, is going to keep the foreign currency of our India. Manages manager of the foreign exchange, right? It acts as custodian and manages the Foreign Exchange Management Act, that is FEMA, which was introduced in 1999. 1999 ईयर में FEMA एक एक्ट आई थी, उसमें आरबीआई को होल्ड अथॉरिटी दी गई थी कि आपको फॉरेन एक्सचेंज की जो कस्टडी है रखनी है, मैनेज करना है, राइट. आरबीआई बाइज एंड सेल द फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया रुपीज वर्सेस फॉरेन करेंसीज लाइक यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड एंड जापानीज येन. नाउ इतनी सारी फॉरेन करेंसीज को इंडिया के साथ, इंडिया की रुपी के साथ बैलेंस करके रखने के लिए, एक्सचेंज करवाना होता है, एक्सचेंज के लिए बाय एंड सेल ऑफ द करेंसीज, हु इज गोइंग टू डू? So right authority, or you can say legal authorized person or institute is RBI. Those RBI can purchase and sell the foreign currency, right? So वहाँ से हम लोग को foreign currency अगर exchange करवानी, purchase करनी है तो मैं वहीं से करूँगी, अगर sell भी करनी है तो RBI के को is the legal authorized institute to purchase and sell the foreign currency. Now moving towards the next topic, that is non-monetary functions, that is B part of the functions of RBI. Non-monetary means पैसे के अलावा भी और कोई काम करते हैं. अब तक जो भी हमने किए, that all the functions were related to the money terms, money के साथ related थे. अभी money के अलावा भी कुछ function करती है जो पैसे से related नहीं है. रोल ऑफ एन सुपरवाइजर, उसको सुपरवाइज करने का है. यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं आ रही है. सुपरवाइज किसको करेगा? You can say all the commercial banks. So RBI enjoys the wide power of supervision and control over commercial and cooperative banks relating to the licensing and establishment, branch expansion, liquidity of their assets, management and method of working, amalgamation, reconstruction and liquidation. Right, इतने सारे topics का overview. Supervision कौन करता है banks के ऊपर? That is RBI. ठीक है, किसी बैंक्स को मर्ज होना क्या है, किस तरह से उनकी वर्किंग मेथड्स होगा, एसेट किस तरह से लिक्विडिफाई करेंगे, ब्रांच बनानी है तो उसको कैसे एक्सपांड करना है, लाइसेंस लेना है, एस्टेब्लिशमेंट करना है दूसरी बैंक्स को, सो कौन करेगा इन सब का व्यू? दैट इज आरबीआई. द आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू कैरी आउट द periodical inspection of the banks and to call for returns and necessary information from them. RBI के पास authorized institution है, अगर उसको periodically, monthly, 6 monthly, 3 monthly बैंक में जाके इंस्पेक्शन करना है, so they are free to go and do the inspection and call them for returns also. अगर कोई returns किसका नहीं किया हुआ है properly, so उसको वो कॉल करके बोल भी सकती है, and then necessary information from them, जो भी information चाहिए वो उनसे ले सकती है at any time. The next one is promotional function. Other than you can say monetary functions के अलावा ये लोग क्या करते हैं? RBI नॉन मॉनेटरी फंक्शन करती है. उसमें फर्स्ट हमने देखा रोल ऑफ सुपरवाइजर, दे आर गोइंग टू सुपरवाइज ऑल द कमर्शियल बैंक्स. नेक्स्ट वन इज प्रमोशनल फंक्शंस, कि अभी कमर्शियल बैंक्स को कैसे आगे आना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब भी कौन सोचेगा? RBI. द मेजर फंक्शन ऑफ RBI इज टू प्रमोट द बैंकिंग हैबिट्स, एक्सटेंड banking facilities to the rural and semi-urban areas, and establish and promote the new specialized financial agencies according to the need of an hour. Electronic, देखो आजकल कैसा सिस्टम चलता है, internet money, you can say electronic money, right? Within a seconds you can transfer from one account to another account. ये सब एडवांसमेंट कैसे आता है? आरबीआई गाइड करती है, सोचती है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एन आवर, एंड देन कमर्शियल बैंक्स आर सपोज टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड दे हैव टू गिव latest facilities to their customers. According to the Reserve Bank has to help in the setting up the IFCI, SFC, ये सब देखो IFCI कोड वगैरह न्यू आए हैं, उसकी वजह से इजीली हम लोग ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं. डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन 1962, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इन 1964. सो इन सब की हेल्प से बोल सकते हैं प्रमोशन करना, ये सब फैसिलिटीज जो है बैंक सेटिंग अप करती रहती है, एडवांसमेंट लाती रहती है. अकॉर्डिंग टू मीन्स बोल सकते हैं मार्केट में सर्वे भी करना हो कि लोगों को क्या चाहिए अकॉर्डिंग आज की फैसिलिटी के हिसाब से, सो वो कौन करता है? आरबीआई ही करता है. Next is financial inclusion and development. Last topic of this question you can say, that is functions of Reserve Bank of India, and that we have done monetary as well as non-monetary functions. Okay,
In non-monetary functions, third one, last one, we are doing financial inclusion and development. Development करना हो किसी का भी फाइनेंशियल टर्म्स में कौन करेगा? आरबीआई. इंडिया इज द कंट्री विद अ ह्यूज डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज. आपने देखा डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है. डाइवर्सिटीज इन टर्म्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, ओके, राइट, इन एवरीथिंग वी कैन से वी आर डाइवर्सिफाइड. It provides the special credit facilities to priority sectors like agriculture, small scale industries, self-employed people, traditional and cottage industries. Now see, they are also having some diversified projects, right? जिसको लोन चाहिए, so ये लोन तो देंगे, लेकिन किस किस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? एग्रीकल्चर वाले को. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो उसको इंपॉर्टेंस देंगे. सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है कि वो उसके पास कोई हुनर है और वो सेल्फ अपने बेसिस पे कुछ एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहता है, तो ऐसे पर्सनस को लोन देंगे. फिर ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज भी स्मॉल स्केल में आती है, उनको भी लोन चाहिए. तो पहले इनका एम होता है कि इन इंडस्ट्रीज को पहले लोन दिया जाए. इट एनहेंस द अवेयरनेस रिगार्डिंग द बैंकिंग अमंग द मासेस. देन बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू द कॉमन पीपल देना होगा, तो वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इन द प्रेजेंट टाइम्स आरबीआई मैनेज द प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना. आपने देखा होगा ये योजना अच्छी तरीके से चल रही है. With the minimum amount, the persons can open their account, and if they want to withdraw more than their amount, they can withdraw. मीन्स बोल सकते हैं एक अच्छा योजना अकाउंट है. वो भी कौन मैनेज कर रहा है एट टाइम्स में? आरबीआई ही मैनेज कर रही है, सीधा अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राइट. आरबीआई ऑल्सो वर्क्स टुवर्ड्स द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द कस्टमर्स. नाउ आरबीआई को एक ये अथॉरिटी है कि जो भी कस्टमर्स के बोल सकते हैं कंप्लेंट्स आते हैं, राइट्स हैं, उसको कौन प्रोटेक्ट करवाता है? आरबीआई. आपके साथ भी अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, किसी कोई भी कमर्शियल बैंक जो है आपको आपके साथ फ्रॉड करती है, सो यू आर हैविंग राइट टू पर्ज योर कंप्लेंट इन आरबीआई. उसकी वेबसाइट पे हमको डायरेक्टली जो है कंप्लेन लॉन्च करनी होगी, और दे आर गोइंग टू टेक अ सीरियस एक्शन अगेंस्ट द commercial banks, right? So these all were the functions we have done. Functions of we have done RBI, Reserve Bank of India. In that we have done that is monetary and non-monetary functions.